Afternoon students. So now we will discuss about new chapter scalar and vector. So scalar and vector कौन? So it is a mathematical tool. So mathematical रो जिन आमे जेमते एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ले सिंप्लिफिकेशन सरल कर बोली गोटे अछि करछन नै. So similarly हमर फिजिक्स रो डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करिया पे हमें स्केलर वेक्टर रो सहायता नेमा. सो ता पूर्व सो स्केलर कोन वेक्टर कोन. सो स्केलर हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ले. सो स्केलर केमिति जानिया वेक्टर केमिति जानिया. सो स्केलर रो एडिशन सब्सट्रैक्शन केमिति करिया वेक्टर रो एडिशन सब्सट्रैक्शन केमिति करिया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केमिति करिया. सो हमें वन बाय वन डिस्कशन करिया. सो बाय द हेल्प ऑफ स्केलर वेक्टर we will discuss about the kinematics and dynamics application of one dimensional motion, two dimensional motion, three dimensional motion, Newton's law of motion, all about with the help of scalar and vector. So first scalar, what do you mean by scalar and vector? So one is scalar, another is vector. So depending upon the magnitude and direction of a physical quantity, these are divided into two types. One is scalar quantity, another is vector. So physical quantity रो magnitude और direction को आधार करी हमर physical quantity आउथे दी भाग डिवाइड होला गोटे scalar आ गोटे vector. So scalar definition कोन कहला the quantity which have only magnitude is called scalar quantity. So जो physical quantity only magnitude अच्छी ताको हम गया scalar quantity. That means scalar, the value of scalar quantity does not change one place to another place. So any direction रे the value of scalar quantity remains constant. Example देखिए हमें एबे मन लिखली mass. So mass लिखली मन 5 kg. So 5 kg ता तुम एठी नियो सेठी नियो anywhere नियो any direction नियो तार value does not change. So the physical quantity which have only magnitude is called scalar quantity. So similarly मन लिखली length. गोटे length नेली 5 cm. सेटा कोन तुम एठी नियो एनी डायरेक्शन रे नियो तार लेंथ रे केते हो 5 cm रा. नेक्स्ट मु टाइम नि. सो टाइम मन 5 सेकंड ने. सो एनी डायरेक्शन रे द वैल्यू ऑफ टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. सो इट इज ए स्केलर. सिमिलरली एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज एनर्जी. स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल होती है एनर्जी, वर्क. There are many scalar quantities are there. So discuss one by one later. So one thing is that the physical quantity which has only magnitude is called scalar quantity. The value of scalar quantity does not change in any direction. So remains constant in any direction. So जो physical quantity रो केवल magnitude अछि ताको हम कहे scalar quantity. So vector quantity कोन तार magnitude as well as direction थिबो आमे ताको कहे vector quantity. So what vector quantity represents? The quantity which have both magnitude as well as direction is called vector quantity.
जो क्वांटिटी रो इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ओके थिबो तको हम गया वेक्टर एग्जांपल सो हम लिखली वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम सो कोन हो वेलोसिटी मन रहला 5 सेंटीमीटर को डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट बट टुवर्ड्स वेस्ट सो जो मैग्नीट्यूड रो जो फिजिकल क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अछि हम देखो या वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल हम लिखली द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल सो v velocity of a particle 3 meter per second towards or due to towards east so east direction को कोन अछि एतरी अछि सो तार वेस्ट रे तार वैल्यू चेंज है so the value of vector changes from one direction to another so गोट ए डायरेक्शन रे गोटे ए पॉइंट रे गोटे डायरेक्शन अलग पॉइंट रे आ गोटे डायरेक्शन so तार मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन थिबो सो हमें ताको कोया वेक्टर सो वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट मनोरा ए बॉडी टा अछि मु आकु फोर्स पकेली सो ए डायरेक्शन फोर्स पकेले एपड़ जाउ मनोरा एपड़ पकेली सो एपड़ पकेले ए डायरेक्शन रे जिवो एपड़ पकेले अपवर्ड जिवो एपड़ पकेले डाउनवर्ड जिवो सो डिफरेंट डायरेक्शन रे फोर्स रो डिफरेंट डायरेक्शन आछि सो डिफरेंट पॉइंट सो ताको जदी दीटा अछि डायरेक्शन थिबो एज वेल एज मैग्नीट्यूड थिबो ताको हम गया वेक्टर क्वांटिटी सो डिस्कशन करिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम रिप्रेजेंट सो एग्जांपल होची वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंट ओके सो टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी मैग्नीट्यूड जदी ओनली मैग्नीट्यूड अछि ताको स्केलर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अछि हम ताको वेक्टर क्वांटिटी ओके सो तुमको जी फिजिकल क्वांटिटी मु पढ़ाई डायमेंशन रे सो तुम कंपेयर करियो कोटा स्केलर कोटा वेक्टर तुम निजर योर होमवर्क योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट व्हिच क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी व्हिच क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी ओके देन देखिए हम देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो देखो दीटा पॉइंट ए एंड बी अछि ए बी तो स्केलर वेक्टर आधार रे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग जाने स्पीड और वेलोसिटी रो मीनिंग ओके सो द नंबर ऑफ ए रु बी जीवा पई मोर नंबर ऑफ पाथ अछि रास्ता सेटा 1 नंबर पाथ एटा 2 नंबर पाथ एटा 3 नंबर so distance mu ka kabi the possible of paths the number of possible paths from A to B from one point to another point one point to another point is called distance okay similarly the shortest distance between 2 points is called displacement so it is a straight line देखो ए रु बी जिया मैं तीनटा चूज करछि सो सब जगह एकटा डिस्टेंस दुईटा डिस्टेंस तीनटा डिस्टेंस बॉडी डिस्प्लेसमेंट कोन ना डिस्प्लेसमेंट ता होची जोटा सबुठ छोटो रास्ता ता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ता आगे डिस्प्लेसमेंट हो
डिस्टेंस टा कौन हम डिस्प्लेसमेंट हम आ कौन कंडीशन सर्ट सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन तो याकू कौन गया सो सब कौन हो स्ट्रेट लाइन हो कहबी डिस्प्लेसमेंट ओके सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी it is a scalar quantity displacement is a vector quantity it is a vector quantity okay so it कौन जानलो ना it is a scalar quantity it is a vector quantity okay so displacement is the shortest distance between 2 points. Any number of paths from one point to another point is called distance. So it is a scalar quantity, it is a vector quantity. बुझिला so distance और displacement मु scalar vector रे ताको define करी. Next representation of a vector. The representation of a vector स्केलर क्वांटिटी तमे जेमिति अलजेब्रिकली लिखि परियो बट वेक्टर क्वांटिटी लिखिया ता पे गुडे रूल अछि ओके सो इट इज डिनोटेड बाय a vector or bold letter मैक्सिमम हम आपको यूज करिया ए ऊपर गोटे एरो मार्क करते ताको ए वेक्टर सो कोन रिप्रेजेंट करते देखो मनर ओरिजिन होची ओ दैट इज इनिशियल पॉइंट दिस इज ए सो OA is equal to a vector okay और मु मनर इमेज O small image. So it is going to be OA is equal to a vector. So O represents initial point and OA length represents the magnitude. So OA length का magnitude दबो आप कौन करियो ना एरो मार्क ये जो एरो हेड represents direction okay so OA so the good initial point I would final point OA एमिदी represent OA can be represented by this and a vector or OA represented by this so a vector so O टा होची initial point OA एती length टा कोन दोची a vector रो magnitude represent करची एरो हेड टा कोन करची direction को represent करची so magnitude टा केते लिखिया so magnitude of a vector is देखो मॉडुलस एमिति लिखि परिया और खाली ए भी लिखि सो एटा होची ए वेक्टर ता खाली ए लिखिया मीनिंग होची ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड होची ए और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ले दीटा गारा दे मॉडुलस सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टोटल वेक्टर सो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड और बोल्ड हेड बट यूजुअली आमी एटा को आमी निया होची okay so this is all about the representation of a vector what is the magnitude of a vector and the direction टा के दोची ए एरो हेड टा हमरो direction दोची okay magnitude टा एटा magnitude गया एटा को direction गया बुझिला next मनोर हम लिखिली velocity 3 kilometer per hour or kilometer per second so due to
ईस्ट सो कौन लिखबे एटा देखो v रो एटा लिखी सो मैग्नीट्यूड टा के 3 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन टा ड्यू टू ईस्ट ओके सो वेलोसिटी को पड़े जाउची ना एपड़े जाउची केते 3 किलोमीटर पर आवर सो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड केते 3 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन को पड़े एपड़ अछि टुवर्ड्स ईस्ट अछि ओचे मनर अपवर्ड अछि बोले हम लिखे अपवर्ड ड्यू टू अपवर्ड लिखे ड्यू टू डाउनवर्ड भी लिख परिए सो मैग्नीट्यूड केते 3 किलोमीटर पर आवर और v रो मैग्नीट्यूड केते खाली भी 3 किलोमीटर पर आवर एटा लिख पे और एटा बुझला मनर फोर्स ला वेक्टर क्वांटिटी मन लिखली 5 न्यूटन ड्यू टू डाउनवर्ड सो फोर्स रो मैग्नीट्यूड हेबे केता होरे 5 डायरेक्शन पड़े एंड ड्यू टू डाउनवर्ड सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड था एज वेल एज डायरेक्शन था सो रिप्रेजेंट होची एटा होची तार मैग्नीट्यूड एटा होची तार डायरेक्शन सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी ओके नाउ speed and velocity देखो स्पीड इज इक्वल टू तुम कोन पढ़थिलो प्ले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बट वेलोसिटी इज इक्वल टू कोन पढ़थिलो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम so speed देखो distance the scalar time the scalar so speed is scalar quantity but velocity displacement is a vector quantity time is a scalar quantity so vector by scalar is a vector so velocity is a vector quantity सो मु एठी स्पीड लिखली गोटे बॉडी रो सो स्पीड इज इक्वल टू कोन लिखली s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर को डायरेक्शन को जान बट एटी यदि वेलोसिटी लिखली 3 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड ड्यू टू और टुवर्ड्स वेस्ट इन लिखियो ओके आर मैग्नीट्यूड केते 3 हला सो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड टा होची स्पीड आमे काइनेमेटिक्स रे आगे डिस्कशन करिया अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी सो एटा मन रखा स्पीड टा होची स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी टा होची वेक्टर क्वांटिटी ओके बट आर यूनिट मीटर पर एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड आर भी मीटर पर सेकंड यूनिट सेम बट इटा को अलग दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो next types of vector so different variety of vector अछि हमें one by one discussion करिया so first vector हला equal vector हला so two vectors definition लिखिया two vectors are said to be equal vector if they have same magnitude and direction same magnitude as well as same direction थियो आमे देखो या equal vector so a vector
इक्वल टू बी वेक्टर अर्थात ए रो मैग्नीट्यूड जहा बी रो मैग्नीट्यूड से आउ ए रो डायरेक्शन जो पड़े बी रो डायरेक्शन से पड़े ओके सो एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स आम पर डिस्कसन करिया 0 हो पारे 180 डिग्री हो पारे पर डिस्कसन करिया ओके खाली इक्वल वेक्टर डेफिनेशन देखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड कौन टू इक्वल वेक्टर ओके देन लिखिया सेकंड नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर ओके so two vectors are said to be negative vector each other if they have same magnitude but opposite direction okay so दीटा वेक्टर अछि जदि दीटा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड सेम अछि बट डायरेक्शन अपोजिट अछि ताको हम कोन कहया नेगेटिव वेक्टर देखो मनोरा ए वेक्टरटा ए डायरेक्शन रो अछि so b वेक्टरटा सेम मैग्नीट्यूड बट तार अपोजिट डायरेक्शन रो एक्ट करछि so हम एडी कोन लिख परिया a is negative of b तार अर्थ a और b रो मैग्नीट्यूड सेम the magnitude of a and b are same but the direction of a is opposite to the direction of b is called negative vector okay negative vector रो मीनिंग बुझला the vectors two vectors are said to be negative vector if they have same magnitude but opposite direction is called negative vector बुझि पालो बिले नेक्स्ट दिबा unequal vector so unequal vector कोन ना कोटा भी गोटे मैग्नीट्यूड अलग आइतो और डायरेक्शन अलग आइतो ओके सेम डिफरेंट है कोटा भी गोटे क्वांटिटी डिफरेंट है हम देखो unequal vector so two types गोटे होची पैरेलल वेक्टर और गोटे होची एंटी पैरेलल वेक्टर ओके सो पैरेलल वेक्टर कोन दीटा वेक्टर को हमें पैरेलल द टू वेक्टर्स आर सेड टू पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव सेम direction but may or may not same magnitude okay so देखो ये a b रो डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड ता सेम ही पारे न ही पारे ओके हम देखो या पैरेलल वेक्टर ओके अनइक्वल हैला नहीं सो एंटी पैरेलल वेक्टर कोन कहया two vectors are said to be anti-parallel vector if they have opposite direction but may or may not same magnitude
देखो ए बी अच्छी सो ए वेक्टर रो डायरेक्शन जोठे अच्छी तार ठीक ऑपोजिट रे बी रो डायरेक्शन अच्छी बट ए रो मैग्नीट्यूड सेम हे पारे सेम न हे सो ता हम कहया एंटी पैरेलल वेक्टर तुम देखो इक्वल वेक्टर पढ़थिलो सो मैग्नीट्यूड सेम आउ डायरेक्शन सेम इक्वल वेक्टर पढ़थिलो सो मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम सो पैरेलल वेक्टर रो डायरेक्शन कोन सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ता सेम हे पारे आ कोन हे पारे सेम न हे सेथि में कोन कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स ऑल इक्वल वेक्टर्स आर एटा तो वेन डायग्राम ड्रा कर देखो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर सब जाक इक्वल वेक्टर पड़ जाउछ पैरेलल वेक्टर रे जाउछ ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर हे परियो बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर बुझि पालो सब जाक पैरेलल वेक्टर सब जाक इक्वल वेक्टर पैरेलल भीतर जिवे काई मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अछि पर मैग्नीट्यूड ता सेम हेई पारे न हेई पारे सेति में कोन होला ना सब जाक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर भीतर रही सब जाक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर भीतर रही बट सब जाक पैरेलल वेक्टर इज नॉट इक्वल वेक्टर एबे एटा नै एटा को हम इक्वल कहि पारे काई यार मैग्नीट्यूड सेम नै बुझि पालो सिमिलरली एंटी पैरेलल वेक्टर आ नेगेटिव वेक्टर देखो नेगेटिव वेक्टर सो कोन हो नेगेटिव वेक्टर कोन डायरेक्शन अलगा मैग्नीट्यूड सेम एटी डायरेक्शन अछि ना नै से आपको नेगेटिव वेक्टर टाको मो एंटी पैरेलल वेक्टर कहि परिबी बट सब जाको एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हे परिबी बुझि पालो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल may or may not okay all negative vectors are anti-parallel vector but all anti-parallel vectors are not negative vector okay so this is about equal vector or unequal vector parallel vector or anti-parallel vector so हम एंगल लेबे जानि देखो दीटा इक्वल वेक्टर अछि सो पैरेलल लाइन अछि सो ए और बी दीटा इक्वल सो थीटा इज इक्वल केता हो 0 0 न नहीं गोटे आ गोटे ऊपर कोइंसाइड सो दीटा पैरेलल लाइन भीतर एंगल होछि 0 सो थीटा इज इक्वल टू 0 दीटा एंटी पैरेलल वेक्टर भीतर एंगल केता हो मनगर एमिति अछि मेरे रूल पछे बढ़िया एंगल बिटवीन टू वेक्टर so theta is equal to 180 degree so ये एपट अछि एक एपट अछि एपट एटा को एठु नै रखि so केता हो 180 so दीटा इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर भीतर एंगल होची 0 डिग्री दीटा एंटी पैरेलल और अनइक्वल एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर भीतर डायरेक्शन होची 180 ओके आमे ब्रीफली डिस्कशन करिया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स so एति मन रख नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर आसला तमरो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर okay so the vector having zero magnitude but arbitrary direction zero magnitude but arbitrary direction is called null vector or zero vector okay so गोटे वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 0 होइजो बट तार डायरेक्शन थिबो सो ताको कोन कहबी null vector or zero vector so it is represented by it can be represented by zero vector or null vector example गोटे point or velocity at maximum height
ये सब एग्जांपल होची नल वेक्टर देखो मु गोटे अपवर्ड थ्रो कली सो अपवर्ड गोटे जिनसटे थ्रो कली ग्राउंड सो थ्रो कले मैक्सिमम मनर एति हाइट गला सो मु गोटे वेलोसिटी देथिली ना नहीं गोटे डायरेक्शन एटू वेलोसिटी कहया ना स्पीड कहया वेलोसिटी कहया सो गोटे वेलोसिटी रे देथिली सो हाईएस्ट पॉइंट रे वेलोसिटी ता केते गला 0 सो बाउंड डायरेक्शन को पटा गाछ एपट अछि देखो ए हाईएस्ट पॉइंट रे बी पॉइंट मनर एटा सो ए बी पॉइंट रे कोन होला वेलोसिटी ता गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार क्वांटिटी 0 हो गला बट वेलोसिटी डायरेक्शन रहउची ना नहीं सो तापर आउथरे डायरेक्शन ता बदलुची तळु मैक्सिमम सो मु गोटे वेलोसिटी रे देथिली मैक्सिमम रे केते गला वेलोसिटी 0 हो गला सो एई पॉइंट रे हमें आपको कहया नल वेक्टर बुझी पाला ना नहीं सो इट इज डिनोटेड बाय 0 वेक्टर एग्जांपल आउरे अछि सो गोटे पॉइंट आ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट सो प्रॉपर्टीज कोन सो गोटे वेक्टर सहित मु नल वेक्टर जदी ऐड करबी सो से वेक्टर निजे ही एटा तमे a प्लस 0 दिन पढथिलो एटा नल वेक्टर तार मैग्नीट्यूड 0 बट आर्बिट्ररी डायरेक्शन सो ताको गया नल वेक्टर और 0 वेक्टर बुझिला नेक्स्ट co-initial vectors the vectors having same common initial point is called are called co-initial vector जो वेक्टर जगह गोटे कॉमन पॉइंट थिबो सब जगह पॉइंट गोटे जगह थिबो सो ताकू हम कहया देखो ओ ए बी सी सो एटा ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर दिस इज सी वेक्टर सो सब जगह कॉमन पॉइंट के ओ सो दीज आर कॉल्ड co-initial vectors okay so here a b c vectors are said to be co-initial vectors next 33 मिनट हो गला 33 next collinear vector the vectors are said to be collinear if their line of action is same okay गोटे लाइन ऑफ एक्शन रे जदी वेक्टर होइला मनोर एटा ओ बा गोटे लाइन रे जदी हमें मूर्ख भाषा रे कहया सो गोटे लाइन रे जदी एक्ट करी ओ ए ओ बी ओ सी तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सब जगह एक्शन को लाइन रे ए लाइन ऊपर ए लाइन रे नहीं so that is called a b c are called collinear vectors okay collinear गोटे होची co-initial vectors आ गोटे होची collinear vectors नेक्स्ट बढ़िया coplanar vectors if the vectors have same plane they are called coplanar vectors okay so plane माने कोन रे so plane माने होची एटा गोटे plane next
ए ब्लैक बोर्डटा गोटे प्लेन एटा गोटे प्लेन ना नहीं हेले आमे वेक्टर एमिन नेबा जेमिति ए प्लेन रे रही देखो मु ए वेक्टरटा नेली ए वेक्टरटा नेली सो एमिति रखले गोटे प्लेन रहउछि ना नहीं एमिति रखले गोटे प्लेन रहउछि ना नहीं सो एमिति रखले गोटे प्लेन रहउछि ना नहीं तो जेमिति रखिया दीटा वेक्टर कोन रहउछि गोटे प्लेन रहउछि बुझला एबे मनर तीनटा वेक्टर मु नेबी देखो तीनटा वेक्टर नेली सो दीटा वेक्टर गोटे प्लेन रे रही जाइबे बट तीनटा वेक्टर मन रखले एटा गोटे वेक्टर देखो बोले एटा गोटे वेक्टर बट एटा गोटे वेक्टर तीनटा जाक टच करछि ना नहीं तीनटा जाक टच करछि ना नहीं प्लेन बट ए प्लेन ऊपर ना देखो ए प्लेन ऊपर पूरा अछि दे आर if they have same plane एटा पूरा अछि सेम प्लेन बुझला नै सो ए दीटा वेक्टर प्लेन रहले बट ए प्लेन रहला सो ए बी आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स बट सी नॉट कोप्लानर एबे मन रहला देखो सो एबे तीनटा को गोटे प्लेन रे अछि आगु सो ए बी सी आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स बुझि पालो सो दीटा वेक्टर मस्ट बी कोप्लानर हेबे बट तीनटा मे और मे नॉट बुझि पालो नेक्स्ट डायग्राम ड्रा करो सो गोटे प्लेन रे जेतला वेक्टर रहले मिनिमम दीटा रहयो हला these are called coplanar vectors okay then बढ़िया localized and delocalized localized and delocalized vectors are fixed the vectors which are fixed are called localized vector the vectors which are not fixed are called delocalized vector okay मनोरा मु नेली देखो देखो एटे ए वेक्टर टा कोन होची ए ओरिजिन सहित फिक्स हे गला सो आकु मु कहबी लोकलाइज वेक्टर ओके मनोरा एमिन नेबी सो ए वेक्टर टा मु एठी लिखि परिबी ता कहबी डीलोकलाइज वेक्टर सो ए वेक्टर इज ए लोकलाइज वेक्टर बट ए बी सी एठी जदी मु ए नेली तो आपको कहबी डीलोकलाइज वेक्टर बुझिला गोटे होची लोकलाइज आ गोटे होची डीलोकलाइज सो आमे काइनेमेटिक्स रे पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर सेठी पछे पढिया बट लोकलाइज एंड डीलोकलाइज जदी गोटे वेक्टर टे फिक्स हे गला सो हम त कहया लोकलाइज जदी ना फिक्स नै छै त कहया डीलोकलाइज ओके नेक्स्ट गुड शॉर्ट नोट लिखो if a vector is shifted from one position to another position without changing its direction its value
रिमेन्स सेम ता वैल्यूटा सेम कौन होला देखो मनर गोटे वेक्टरटा एमती अछि हला ए वेक्टरटा ए डायरेक्शन रो अछि ओके तार डायरेक्शन एटा मु ताकू ए पोजीशन रो ए पोजीशन को शिफ्ट करैली पटा डायरेक्शन से डायरेक्शन आगे रहला ना नहीं सो एटा को भी कहि पारि ए वेक्टर मनर एमी थिला सो मु ताकू मनर एमी कर देली सो एटा ए सेम वेक्टरटा बोला ए सो इट इज नॉट एप्लीकेबल एटे कोन हिजो डायरेक्शन टा अलग हेला सो एटे a not is equal to a but एटे a is equal to a ओके मनर गोटे वेक्टर टा एमिति अछि ओके सो मु ताकू एमिति करू एटे कोन लिखली देखो एटी थिला एटी गला सो सेम डायरेक्शन आगे अछि ना नहीं मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन भी सेम सो आकु मु शिफ्ट करी एटी गोटे पॉइंट लिखि पर बट important point without changing its direction its value remains constant एटा हे पेरे मनर एमिति अछि सो मु ए वेक्टर को कोन करबी डिस्प्लेसमेंट करी सो एटा ठीक हबो एमिति भी ठीक हबो ए तळु को भी आनी परबी एटा भी ठीक है परियो आ कोन एति भी आनी परियो हला सब जाको ए हे परियो देखो मैग्नीट्यूड सेम अछि सब जाको कांगे अब गोटे वेक्टर को डिस्प्लेस करी बट डायरेक्शन सब जाको कोन अछि अपवर्ड अछि सो एटे सब जाको वेक्टर कोन हो डज नॉट चेंज एटा जहा एटा से बट डायरेक्शन कोन अछि सेम अछि ऑलरेडी मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड वन पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स direction the value remains same okay important point so next class we will discuss about the representation of scalar vector पढ़लो so scalar टा केन करे 5 केजी हम लिखला जेमि हम algebraically लिखा होछि so तमरो काम होला so जति की फिजिकल क्वांटिटी अछि के स्केलर के वेक्टर तम काम सेटा डिटरमिनेशन करियो नेक्स्ट क्लास we will discuss about हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन हमें एमनी 5 केजी प्लस 3 केजी 8 केजी लिखचंदी सो 5 केजी माइनस 3 केजी इज इक्वल टू 2 केजी लिखा होची सिमिलरली एडा होची अलजेब्रिकल एडिशन सब्सट्रैक्शन सो वेक्टर कोन अछि ना मैग्नीट्यूड अछि एज वेल एज डायरेक्शन अछि सो इट इज कैन नॉट बी एडेड अलजेब्रिकली सो ता पे किछि मेथड अछि एडिशन सब्सट्रैक्शन करिया को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करिया को सो हमें नेक्स्ट क्लास रे डिसाइड करिया so thank you happy Diwali to all of you